doing using software only. Okay, so we have an open source software. Yes, we have an open source software where I want everyone to install that software so that while I'll be taking your experiment, okay, experiment number 1, 2, 3, and 4. So all these experiments sitting at home, you can try at your desktop computer or at your laptop. Okay, so installation of that particular software and how to install, I think that part we can take in the next week. Okay, today I will be taking about the first experiment, that is a study experiment. But before I go with the study experiment, I need to show you what are the different experiments which we will be seeing. Okay, so I will be sharing the screen. Are you able to see on the screen list of experiments? Yes, sir. D9A and D9B? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, all of you listen. Now, these are the tentative list of experiments which we will be doing in this semester. Okay. As per the Mumbai University guideline, we have to have 8 to 9 experiments. Some experiments should be based upon software, that is simulation software, and some of the experiments should be based upon hardware. Okay. So, जैसे हमको पता है कि आई एम डाउटफुल वेदर वी विल बी रिज्यूमिंग टू द कॉलेजेस to the college because of this pandemic situation, so we won't be able to join the college, so we thought of conducting all the experiments based upon software. Okay, based upon software. We do have all the hardware related experiments in the lab. So this microcontroller lab will be held in 409. Okay, 409 where actually I am sitting. My cabin is in 409, but we won't be going back to the college and going through the hardware. So these experiments जो आप देख रहे हो screen पे, here you will be able to see some of the experiments which are software based, and there are a few experiments which are hardware based. Okay, so these are the tentative experiments. We are going to do some modifications in this experiment so that you will be able to see only software experiments. Okay, so here if I show you the first experiment is about the arithmetic operation. Okay, so D9A students and D9B students, as you all are aware that in microcontroller 8051 we have ALU which actually does the arithmetic and logical operations. So using 8051 we will be actually doing the addition, subtraction, multiplication and division. So all the arithmetic operations we will be doing in using the software. So which software we are using for carrying out this addition, subtraction, multiplication, division? We are using Keil Macrovision. Okay, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ Keil Macrovision. Can you see on my desktop this icon? Can you see on my desktop? This is an icon. So this is a Keil Macrovision version 5. Okay, तो ये जो सॉफ्टवेयर है, this is open source software which is dedicated for 8051 processor. So it is a compiler as well as simulator. तो हम जब program सीखेंगे, now I think both of the classes are in the third module where we are actually understanding 8051 microcontroller. जब हम programming लेंगे, then you will be able to understand what are the different syntax, how the program has to be written, what are the different instruction sets, okay, what are the syntax. So all these when you understand in the theory class, then only we will be able to understand the different experiments. Okay, तो ये जो हम experiment बता रहा हूँ, that is arithmetic operations. तो ये arithmetic operations में हमको addition, subtraction, multiplication, division ये सब कैसा करना है using Keil software. Okay, so that thing we will see in the next week. तो नेक्स्ट वीक में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कील सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये आपके सिस्टम में कैसे आप इंस्टॉल करोगे और उसको कैसे यूज करना है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस वी हैव इन दिस कील, व्हाट इज द हाउ इज द एनवायरनमेंट ऑफ द कील. ओके,
तो वो होने के बाद ही हम ये फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं, विच वन, दिस वन, अर्थमेटिक ऑपरेशन। बाद में नाउ सी दीज आर द टेंटेटिव लिस्ट, ओके, दीज आर द टेंटेटिव लिस्ट। अब तक हमने इसको कंफर्म नहीं किया है क्योंकि इसमें से कुछ आपको हार्डवेयर भी दिखने वाले, तो हार्डवेयर वी आर गोइंग टू रिमूव फ्रॉम योर एक्सपेरिमेंट। ओके, सो दीज आर द टेंटेटिव। तो पहले अर्थमेटिक हो गया, बाद में हम देखेंगे कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे ढूंढना है। इफ आई गिवन यू 10 नंबर, in those 10 numbers, how do you find out the largest number and how do you find out the smallest number? I mean to say that how do you write down the program? How do you execute that program in Keel software? Okay, so that is A part. B में हम देखेंगे कि ascending or descending order. If I have given you some 10, if I have given you some 10 numbers, so in that 10 numbers, how do you sort? How do you sort those 10 numbers in ascending and descending order? Then you have block transfer and block exchange. You are aware that you have internal RAM as well as external RAM in your 8051. So we have a provision to connect external RAM also. So how do you transfer the data from internal RAM to external RAM or from external RAM to internal RAM? And how do you exchange? Exchange means internal RAM का data external RAM में जाएगा, external RAM का data internal RAM जाएगा. So that is called as exchange. So we will see block transfer as well as block exchange. Again I am saying किसी को कहीं पे भी डाउट आता है, कुछ भी पूछना है, you can stop me at any point of time. Okay. Then timer and serial communication. For D9B students, I have just now started with the third module, in which I have told you that we have timer and serial communication possible using 8051. तो वही हम इसमें भी देखने वाले. Okay. Now actually this digital to analog converter, stepper motor, LED, all these three experiments are hardware based. यहाँ पे हमको एक्चुअली देखना था कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हम 8051 को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं. बाद में स्टेपर मोटर को 8051 के साथ हम कैसे इंटरफेस कर सकते हैं. बाद में एलईडी या 7 सेगमेंट को हम 8051 के साथ कैसे इंटरफेस कर सकते हैं. तो दीज आर 3 हार्डवेयर बेस्ड. तो ये हम सब रिमूव करने वाले. यू डोंट हैव हार्डवेयर एक्सपेरिमेंट्स. देन you are also aware that you also have ARM7 microcontroller in your syllabus. तो हम जब ARM7 सीखेंगे उसके रिलेटेड भी हमको कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना है कील में. ओके, तो ARM7 यूज करके भी हमको अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखना है. कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. So this is also software based. Similarly, C code for to transfer data serially by configuring UART. ओके, तो ARM7 यूज करके भी हम कैसे डेटा को सीरियली ट्रांसफर कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर बेस्ड. ओके, दिस इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर बेस्ड. एंड एट द लास्ट विल बी हैविंग मिनी प्रोजेक्ट. सो यू विल बी मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 4 students and every group will make any small mini project based upon 8051 microcontroller. Okay, based upon 8051 microcontroller. So it is up to your freedom कि आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट 8051 पे करना. सॉरी, नॉट एक्सपेरिमेंट बट द प्रोजेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, which will be treated as a mini project. So the group of 4 students will make a project based upon 8051 microcontroller. And if you want, you can also use ARM7 because these are the microcontrollers as a part of your syllabus. Okay, so these are the list of experiments. These are again tentative lists. The final list we will share with you very soon. Okay, once the experiments are finalized, I can share. Yes, no, mini project you can do as a hardware because you as a 4 students can form a group. So some of you can do the hardware part, some of you can do the software part. Then assembling of that thing you can do at college. Once a week you can visit to the college, or else at your home also you can do. And at the end you can just show us the project. So mini project can be done using a simulation software also as well as by hardware also. But I would suggest that you should go with the hardware. क्योंकि आप लोग हमेशा कॉलेज नहीं आ सकते, but you can once in a week you can visit and you can use the the labs available in our department. See, we have PCB making lab, we have soldering lab. We can do soldering, we can do PCB making, everything we can do at our labs. So if a group can come once in a week for doing all these activities, they are most welcome.
लेकिन मैं आपको हमेशा नहीं बुला सकता कॉलेज में कि आप हमेशा, इसलिए हम हार्डवेयर पार्ट नहीं लेंगे एक्सपेरिमेंट में, बट मिनी प्रोजेक्ट शुड बी डन ऑन हार्डवेयर, एंड इन वर्स्ट केस यू कैन गो विद द सिमुलेशन। अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड करना है तो आप कर सकते हैं, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, we are free to use any type of component, right? Yes, yes, but the core microcontroller should be 8051 or ARM7. You cannot go with the development board, you cannot go with the Arduino, you cannot go with the Raspberry Pi, you cannot go. You can have to use 8051 or ARM7. See, in that case you can use other microcontroller also. PIC you have, okay, PIC you have, so other microcontrollers are also available, but I won't suggest you to go with the Arduino or Raspberry Pi. Sir, but this restricts us. Sir, we have. This restricts us to No, some point. no, see, our main intention is that in the mini project, you should inculcate your project based upon the microcontroller which you have studied in your semester, in your subject. So as far as your syllabus is concerned, you have 8051 as well as ARM7. So once you are understanding is this 8051, why can't you implement this microcontroller in your mini project? So, So means we my, can use 8051 also and the rest others also, right? I mean to say that if you are using microcontroller in your project, that should be 8051 or ARM7. Do not go with any other microcontroller. Other than that, you can use other components, registers, switches, then transistors, what all the component, electronic components you can use. But the microcontroller, if you are using, it should be 8051 or ARM7. Okay, sir. Okay. Okay. So if Sir, also there हाँ is a बोलो mini बोलो बोलो. project B1 in our syllabus. Is this the same mini project or it is different? See, if you see the syllabus, your second year, you have mini project as a different subject. Am I right? Yes, sir. So that in that mini project, if you're talking about that mini project, you will be doing as a separate topic. That is a separate subject you have. But I'm talking about the mini project for microcontroller lab. For microcontroller lab. So as far as microcontroller lab is concerned, you will be doing the project based upon 8051, and the other one which you are talking about, that a mini project, that is the different one. So in this semester, you will be actually doing two mini projects. One mini project as a subject. In that one, you have freedom to do because उसमें आपको ना एक mentor भी allot किया जाता है. इन द आपके डिपार्टमेंट में जो भी फैकल्टी है उसमें से एक फैकल्टी आपको अलॉट किया जाता है, and you have to give the topic, so that is not necessarily that it should be 8051 based microcontroller based, that can be anything, that can be anything. Okay, I think last time also you have done one of the mini project na, where mentors are assigned to you. Yes, sir. हाँ, तो वो Yes, अलग sir. चीज है. हाँ, वो अलग चीज है. आई एम टॉकिंग प्रिसाइजली फॉर माई माइक्रो लैब. Okay, is it clear? So the groups should be formed new groups or that old groups only? No, it is totally depend. It is totally upon you. आपको जैसे पिछले ग्रुप लेना है तो वही लो, या फिर आपको अलग ग्रुप बनाना है. But see that it should be group of 4. Okay, maximum to 4 and minimum should be 3, not less Okay, than sir. 3. हाँ, Okay, sir. okay. So this is about the experiments which we'll be doing in the semester. Now, without wasting the time, what we were planning, myself and Anuradha madam, that we instead of starting with arithmetic operations, let the students should have the feeling of handling the computer. Okay, handling the computer. What does it mean? I will show you here on the. Please see this.
Yes, all of you pay attention. So I was talking about this particular, before we start with the arithmetic operations, we thought of that whether that student should have the feel of handling the computer. Okay, so that is why we have thought of introducing the first experiment. It is not an experiment as such, but it is a study experiment where you will be able to understand, or you will be able to understand the computer as a whole. Okay, I'm talking about the computer as a whole. So in this we have two parts, that is understanding the computer parts. Okay, so I will just read out what does it mean. This study experiment can be divided into two categories. One will be the study of computer hardware part. Okay, listen carefully what I'm saying. So understanding the computer hardware part. Okay, for example, most of you are having laptop. Okay, and very few must be having the desktop computer at your home. So what I meant to say that it specifically talks about what are the hardware components available when you talk about the desktop computer. अभी जैसे मैं अगर लैपटॉप की बात करता हूँ तो we won't be able to see much of the things clearly, but when you talk about the desktop computer you will be able to see the monitor, you will be able to see the keyboard, you will be able to see the mouse, you will be able to see the CPU, that is a desktop, that is a cabinet. Okay, you will be able to see, if you have a printer you will be able to see the printer connecting to the CPU. Okay, if you see at the back side of the cabinet you will be able to see different slots. So so our intention is that you should be familiar with all these hardware parts. You must be familiar with all these hardware parts. Okay, let me give you an example, my personal example. So when I was in graduation I had a desktop computer. तब लैपटॉप कंप्यूटर इतना क्रेज नहीं था, and even the laptop computers were costly. So the people were more comfortable in buying the desktop computer, and they were not going with the branded one, but they were going with the assembling of the computer. Okay, so assembling of the computer means what? The if I have the monitor, suppose if I want to buy a monitor from some XYZ company, if I want a motherboard from so and so different brand. Okay, then then I can take different hardware from different brands, well-known brands, and after that when I bought all these particular hardware, then I can assemble them. So that is called as assembling of the computer. That is called as assembling of the computer. So in your first experiment, that is study experiment, we have divided into two categories. The first one is regarding the understanding of different hardware components of the computer, and second one is assembling and deassembling of the computer. Okay, हम जब हार्डवेयर पार्ट समझ में आएंगे तो हमको पता चलेगा कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से different हार्डवेयर्स वी हैव, और what are the different hardwares we have available in the market, different hardwares available in the market. And after that you should be able to know how do you assemble those hardwares to make a complete system, computer system. Okay, so to give you that feeling, we thought of putting this study experiment, okay, to putting of this first as a study experiment, where you will be having the knowledge of hardware and the knowledge of how do you assemble these computers. I think very few of you might be having the assembled computers at their home. Desktop computer I am talking about. लैपटॉप की जब हम बात करते हैं तो उसमें वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन. हमको वही ब्रांड का लैपटॉप लेना पड़ता है, एसर का हो, एचपी का हो, डेल का हो. वी डू नॉट हैव ऑप्शंस. लेकिन अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात होती है, इवन इट इज रीजनेबल इफ यू कंपेयर विद द लैपटॉप, the desktop computers are it's cheaper as compared with the, or they are less expensive as compared with the laptops, because you have options कि कौन कौन से ब्रांड से मैं ले सकता हूँ, कौन सा कॉस्टली है, कौन सा लेस कॉस्टली है, तो which one I should go. You also have an option कि आपको कौन से depending upon your specifications,
Depending upon your specifications, you can buy the components or the hardware, and after that you can assemble them. Yes, it is also possible to assemble all these hardware sitting at your home. It is possible. Okay, so the first one is the study experiment. In the first one, we will see what are the different hardware components available in the computer system, and the second one is how do you assemble them and disassemble them. कभी अभी ऐसा होता है कि मुझे उसको डिसमेंटल भी करना पड़ता है. Okay, so how do you assemble, how do you disassemble? So that is a part in the second. That is the second part in this experiment. So shall we proceed further now? Shall we proceed further? Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Okay, now see here, introduction to computer. So what is a computer? Computer is an electronic device which takes the input information from the input device and generates the output information, and it will be displayed on the output. As simple as it is. You take an input, you process on that input, and you give as an output. You can take the input from different sources. You can process them. After processing, you can give as an output, and the output can be given in different forms. Okay, so that is a simple definition of a computer. Okay, then it enables arithmetic computations, data processing, information management, storage, and knowledge reasoning in an efficient manner. The word computer is derived from the word compute, which means to calculate. As simple as it is. So actually, previously the computer was what was the function of the computer? It was just to calculate. Okay, as we are doing the calculations in the calculator. So पहले जो था computer, that was to calculate only. Now we have different multitasking functions or where computer is used. Okay, so computer generally considered to be a calculating device that performs operation at very fastest rate. Please stop me if you are not understanding any point. Okay, block diagram of a computer. See, this is the block diagram. Already we have seen this block diagram when you might have studied microcontroller. This block diagram of a computer resembles or it is the same as a microcontroller. Can any one of you tell me why it is so? In a simple sentence. Any one of you? D9A or D9B? Block diagram of a computer resembles with the block diagram of microcontroller. Why it is so? Sir, because sir, microcontroller is nothing but CPU. Microcontroller Sir, is nothing So but microcontroller is computer on a chip. yes. Sir, same I है was- दोनों भी. नहीं, तुमने जो It बोला has वो a अलग बोला. CPU as well as the memory part also. Yes. जो पहला It जो has a CPU, input output ports, and the system bus. yes. मुझे जो पहला आंसर मिला वो इतना ही था कि माइक्रोकंट्रोलर इज अ सीपीयू. नहीं, माइक्रोकंट्रोलर इज मोर देन द सीपीयू. और सेकंड जो आंसर मिला, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट आंसर. सेकंड आंसर था माइक्रोकंट्रोलर इज ए माइक्रो कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप. So microcomputer on a single chip means you have all these on a single chip. What you have? You have a CPU, you have ALU, you have memory, you have IO unit. Okay, output and unit. For IO unit means you have IO ports. Okay, you have IO ports. इसलिए मैंने जब स्टार्टिंग में सिखाया था तो for D9B students I'm talking about that we have talked about microcomputer or computer system. Then we have seen about the microcontroller, then we have seen about the microprocessor, and I have given you the brief differences between them. So here if you see on your screen, this is a computer. So what is a part of a computer? Now this is a CPU which comprises of your control unit and arithmetic logical unit. Then we have a memory. Okay, now memory is a RAM or ROM. RAM and ROM. And for temporary storage, now ये भार क्यों दिखाया है? Because we have an option that we can connect externally the other temporary storage. Can any one of you give me the example of externally connected storage device? SD card. Keyboard, mouse. Keyboard, mouse. No, keyboard, mouse. No. Storage में SD card. SD card. Okay, you can say SD card. Any other option? Pen drive. Yes, pen Pen drive. drive. Yes, pen drive. और जैसे पहले यूज होता था फ्लॉपी डिस्क, Hard disk. जैसे हार्ड Hard disk. डिस्क. यस, हार्ड डिस्क. या फिर आप बोल सकते हो CD ड्राइव. सॉरी, नॉट CD ड्राइव.
CD, that is also storage. तो हम जो बाहर से जो लगाते हैं ना, बाहर से हम जो floppy disk, yes, so they are all the storage, they are all the storage. लेकिन internal storage की जब हम बात करते हैं, so that you have a RAM as well as ROM, that is a part of a, you can treat this as a cabinet, this you can treat as a cabinet. Then you have input device and you have output device. So what are the examples of input devices? Keyboard, So keyboard, joystick, mouse, yes. So they are all input devices. And output devices? Monitor, Monitor, printer. Monitor, printer, scanner. printer, yes. Okay, yes. So they are all output devices. So whole together they form a computer. They form a computer. You, for best example, you can treat this as a desktop computer, where you will be able to see monitor properly, keyboard properly, mouse properly, your cabinet properly. Cabinet के अंदर क्या होता है, ये सब चीजें होती है, motherboard, ये सब चीजें होती है. Okay, so this is a computer. Come to the next part now. So the computer system comprises of three major components. Your system unit, that is a CPU, then memory unit, then input unit and output unit. Okay, so this is the one. Then see here, we have given you one task: identification of the peripherals of a computer, components in a CPU and its functions. Draw the block diagram of the CPU along with the configuration of each peripheral. Now this is a task for each one of you. Task क्या बोल रहा है कि we need to identify the peripherals of a computer. Peripherals of a computer बोलो या फिर components in a CPU बोलो. Okay, that means we have to identify the peripherals of a computer, then components in a CPU and its function. Draw the block diagram of the CPU along with the configuration of each peripheral. Okay, for example, see here. What is the aim? To identify the computer hardware parts. See the first one, cabinet. See the first one, cabinet. Okay, see the first one, cabinet. So it is used to install all hardware devices. आपके कैबिनेट के अंदर आप किसी ने अगर खोल के देखा होगा, अगर किसी ने नहीं खोला होगा तो खोलो आज शाम के टाइम पे और उसमें देखो उसमें क्या क्या चीजें. उसमें मदरबोर्ड होता है, उसमें SMPS होता है, उसमें HDD होता है, उसमें CD-ROM होता है, उसमें FDD होता है. ओके, सो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, SMPS. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SMPS? Switch mode power supply. Switch mode power supply. Yes, switch mode power supply. So all these components are available in a cabinet. Okay, second part क्या उसमें लिखा है? It has start, restart button, LEDs, audio and USB connectors are available at the front side. तो जिन लोगों के पास डेस्कटॉप कंप्यूटर घर पे है उन लोगों के लिए ये देखने को मिलेगा. ओके, सामने में पावर स्विच ऑफ ऑन का होता है, LED ग्लो होती है, रीसेट करने के लिए एक बटन होता है छोटा सा, पावर LED होती है. देन समटाइम्स कैबिनेट के ऊपर ही आपके पास USB लगाने के लिए भी सॉकेट होता है और ऑडियो, अगर आपको माइक्रोफोन या फिर ईयरफोन लगाना है तो उसके लिए भी प्रोविजन होता है सामने. ओके, सो दिस इज अ कैबिनेट. देन कम्स द मॉनिटर. So I'm not going into the detail. You have to go. I will be sharing this particular information with you all so that you can go through this. Okay. Whatever I am finding important, that thing I will explain. Okay. So monitor. So don't you think these are the different hardware parts which forms the computer system? Yes. तो हमने पहले कैबिनेट देखा, बाद में अभी हमने मॉनिटर देखा, उसके बाद हम कीबोर्ड देखेंगे. ओके, so you should know each and everything about the keyboard now. आप सिर्फ अभी कीबोर्ड यूज करने के हिसाब से देखते थे, अभी आपको टेक्निकली देखना है कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं. ओके, so like here, keyboards are available in two modules. These are standard keyboard with 83 to 88 keys. और दूसरा क्या होता है? It is here enhanced keyboard with 104 keys or above. ओके, तो ये सब आपको टेक्निकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से अभी ये सब देखना है. ओके, तो हमने कैबिनेट, मॉनिटर, कीबोर्ड देखा है. देन कम्स द माउस, ओके, देन कम्स द प्रिंटर. अभी प्रिंटर भी इसमें अलग अलग प्रकार के. मोस्ट ऑफ यू माइट बी यूजिंग द लेजर प्रिंटर. So there are laser printer. Before that there was inkjet printer,
and before that there was a dot matrix printer. Okay, now this is obsolete. The dot matrix printers are hardly used. Okay, but most of you are using the laser printer now. Okay, so see the different types of printers available. Then comes the speaker. So then comes the scanner. Okay, so scanner is also one of the input device. Scanner is also one of the input device which we are scanning the image or the text. Okay, then comes the system board. This is important. Motherboard. अगर कॉलेज चालू रहता तो I could have shown you all this motherboard. उसके different components क्या है. Okay, so never mind, but at least sitting at home, जिसके पास desktop computer है, they can just open it and they can just see all these parts. Okay, so what I mean to say that these all parts are very important. Okay, I don't want everyone to know each and every part, but you should know. Okay, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि what are the different parts. Now here we can have, there is a hardware, RAM slot is there. अभी most of this knowledge boys को ज़्यादा होती है as compared to the girls. Okay, for girls also please pay attention that you should know all each and every part. Okay, now here if you see there are sockets. So these are the sockets for connecting the external RAM. I can connect the RAM. So this is a whole motherboard. So motherboard में which is the heart, here is your processor. Your motherboard will contain one processor. Okay, there is one processor. ये processor यहाँ पे होता है और इसके ऊपर fan होता है. उसके ऊपर fan क्यों होता है? Because whenever you are using your desktop computer, your processor is working, and because of continuous working of this processor, the surrounding gets heated. So how do you cool it? We cool it by installing the fan over the processor. ये सब आप डेस्कटॉप कंप्यूटर खोल के देखना जिनके पास घर पे. ओके, इसके ऊपर फैन होता है. एंड समवेयर आल्सो अराउंड यू हैव हीट सिंक. ये देखो ये हीट सिंक है. दिस इज हीट सिंक. So heat sink is also plays an important role to cool down the nearby temperature. Okay, so heat sink we have here. Then here you have a CMOS battery. CMOS battery. आप आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर को कनेक्शन तो अलग बाहर से देते हो, लेकिन ये CMOS बैटरी है जो पावर सप्लाई देता है आपके प्रोसेसर को. ओके, so CMOS battery. So you have to understand each and every part. Next time I can ask you any question. Okay, I am just giving you the brief understanding, but detail में आपको खुद पे Google search करके देखना है. So CMOS battery is there. Then you have different sockets here now for printer connection. So we will see this part in the next slide. Okay, in the next information. So this is a system board you can say, or you can say a motherboard. This is a major part of the PC hardware. It manages all transactions of data between the CPU peripherals. It holds the processor, random access memory and other parts, and has slots for expansion card. ये जो slots मैंने बताया था ना, these are the slots where you actually you connect the RAM. Okay, it is rectangular in shape. So it is rectangular in shape. Okay. Then comes the socket 478. There comes the socket 478. It has 478 pin micro PGA package. It is used installing CPU. Okay, it is a square type design. ये जो CPU heat sink का जो है ना, मैंने जो बताया था fan retention module. So this is the fan retention module, and here at the side of that you have a socket 478. It is used installing CPU. So whenever you install any CPU, so that time the socket 478 is used. I want you to give this as a homework to find out much more about this socket 478. Picture में आपको दिख रहा है socket 478, but actually I want what does it mean. Okay. Then comes the CPU, the central processing unit, which is the heart of a computer. Okay, so I won't go into the detail of this. And this is your processor. This is your processor. Okay. Then comes the RAM slots and SDRAM and DDR-RAM. Okay, so can you see a DDR-RAM and SDRAM? So I want you to find the difference between DDR.
So what do you mean by DDR? So any one of you know what do you mean by DDR? Boys को पता होगा ये सब चीजें. DDR, SD, double data rate synchronous. SD, it is already written here. Synchronous dynamic. हाँ ठीक है. So this is also the homework that you should find the difference between DDR and SD in terms of technical difference. I want. सर ये ऊपर से ऐसा दिखता है, ये रंग का होता है, वो रंग का होता है. That is not the difference. I want technical difference. Okay. You can see here the RAM slot. जिसने कभी देखा नहीं है RAM को वो देख लो यहाँ पे. This is a RAM slot. And on this RAM slot you have many chips. जिसपे अलग अलग चिप्स होते हैं. और ये सॉकेट जो है ना, ये सॉकेट जाता है उसमें जहाँ पे हम उसको पंच करते हैं. Okay. So please go through the RAM slots and DD-SDR. Yes, this is also one of the homework. What is the north bridge and what is the south bridge? This is how do you identify where is the north bridge? Can you see here in the motherboard? In the motherboard, this is a part which is called as a north bridge. मैंने जिसको आपको बोला था कि heat sink जैसा होता है. So actually this is not the heat sink. This is a north bridge. Okay. Somewhere you have a heat sink also, which will cool out the temperature. So this is north bridge, and the location is that it is near to the socket 478. It is near to the socket 47. मैं अगर आपको आपके हाथ में अगर मदरबोर्ड देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे नॉर्थ ब्रिज बताओ, you should be able to show me the north bridge. मैं अगर आपको बताता हूँ साउथ ब्रिज बताओ, तो you should be able to show the south bridge. तो ये जो मदरबोर्ड है, yes, ये जो मदरबोर्ड है, in this motherboard, this is a north bridge and south bridge is here. South bridge is here. अब इसको north bridge क्यों बोलते हैं, वो bridge क्यों बोलते हैं, you have to find out. Now this is a good opportunity to each and every of you to actually understand motherboard क्या होता है. See, if you are going to buy something, not something, but if you want to buy a computer, new computer and desktop computer, if you go to the Lamington Road, and if you want to buy the computer, being an engineer student, you should know all these configurations. आगे के आदमी ने आपको बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए. You should be sound enough to tell the person that I want so and so of configuration. Okay, so for that you should know each and every hardware. That is why I am saying that this is a good opportunity to understand the concept, hardware concept, motherboard, sockets, north bridge, south bridge. Okay, so please try to go and find out why it is called as a bridge and why it is called as north and south. Why it is called north and south. Okay, so that is this. RAM slots हो गया. Okay, the north bridge and south bridge. यहाँ पे explanation is there, but I want you to find by yourself. Okay, then comes CMOS battery जो मैंने आपको बताया था, ये साउथ ब्रिज के साइड में ही है. Okay, I want you the specification of ये कितना वोल्ट का बैटरी होता है. आप जब आप रिस्ट वॉच जो पहनते हैं उसमें भी बैटरी होती छोटी. यहाँ पे बैटरी ये कॉइन साइज की है, exactly the size of a coin. Yes, AAA. 3.3 sir, 3.3 volt. Okay. So that is also the homework. Find out the CMOS battery and tell me the voltage level. These questions I will be asking individually. मैं हर एक का नाम लूंगा और पूछूंगा क्वेश्चन, और जिसको आंसर नहीं आएगा that person will be marked as absent for that lab. Okay, so be careful. Next time I will be asking lots of questions. Okay, I will be throwing lots of questions on you, and जिसको पूछूंगा उसी को आंसर आना चाहिए. जिसको नहीं आंसर आएगा, that person will be marked as absent for that particular day. Then you have yes, primary and secondary ID. So it is also called as ID1, ID2. It used to connecting hard disks, drives, CD-ROM and DVD. Okay,
So this is a primary and secondary. IDE, find out the full form of IDE1 and IDE2. आप जब देखोगे, ये देखो आपका जो बैटरी है उसके साइड में ये दो सॉकेट्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. दिस इज यूज्ड टू कनेक्ट हार्ड डिस्क. डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. Yeah, it is a integrated development environment. Okay. So here you are actually connecting the CD-ROM, DVD-ROM, या फिर disk drive. Okay. So you have to understand what is this, why it is called the primary and secondary. Yes, this is important. You can see this one at the back of your cabinet, at the back of your cabinet. और ये आपको अगर लैपटॉप है तो ये पूरी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, कुछ चीजें देखने को मिलेंगी. ओके, लेकिन जिसके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है आपको ये सब देखने को मिलेगा. ओके, तो दीज आर एक्चुअली द पोर्ट्स, दे आर कॉल्ड एज द पोर्ट्स. ओके, इसलिए मैंने जो बोला था ना, माइक्रो कंट्रोलर विल हैव पोर्ट्स, सो दीज आर द पोर्ट्स. कैन यू सी हियर? कीबोर्ड पोर्ट यहाँ पे लगाओ, माउस पोर्ट यहाँ पे लगाओ, कीबोर्ड यहाँ पे लगाओ, माउस यहाँ पे लगाओ. दिस इज ईथरनेट पोर्ट. ईथरनेट पोर्ट, can any one of you tell me why do you, for what purpose it is used? LAN. Yes. LAN कनेक्शन बोलो या फिर आपके इंटरनेट कनेक्शन जो लगाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हो. आपके घर पे अभी सब, हाँ, दैट इज अ वायर्ड. यस, दैट इज अ वायर्ड. आपके अभी घर पे तो वाईफाई आया है. ऑल ऑफ यू आर यूजिंग द राउटर्स नाउ. राउटर्स है तो डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्ट करके आप लैपटॉप यूज करते हो. लेकिन अगर वाईफाई राउटर आपके पास काम नहीं कर रहा है, then you have a provision, you have a LAN Ethernet cable connecting directly. तो आपके लैपटॉप में अगर Ethernet पोर्ट है, मेरे लैपटॉप में तो नहीं दिख रहा है मुझे. My laptop do not have, because my laptop is very small and so it doesn't have. लेकिन जिसके बड़े बड़े लैपटॉप्स है, you have an Ethernet port, so you can directly connect. Okay, then USB port, अभी बहुत 3-4 पोर्ट्स आ रहे हैं USB के. So this is USB port. This is a parallel port. Can any one of you tell me ये कहाँ पे यूज होता है? जिसके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो बता पाएगा. No one? Yes. Sir, to connect some game disk or something. No. गेम के लिए पोर्ट इधर है. RS-232 communication. No. It is, you will see this when you are connecting. अभी तो यूज नहीं होता है, लेकिन वो सॉकेट दे देते, पोर्ट दे देते, लेकिन ये पहले यूज होता था प्रिंटर लगाने को. ठीक है, प्रिंटर लगाने को. ओके, तो यू कैन सी दिस कैन बी कनेक्टेड विद द प्रिंटर. अभी के जो प्रिंटर है डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट थ्रू द यूएसबी, लेकिन जो पुराने जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ओके, तो वो हम डायरेक्टली पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, देन हियर यू हैव सीरियल पोर्ट. ऑल द सीरियल कनेक्शन कैन बी डन एट दिस पोर्ट. आप कहाँ पे यूज करते हो ये सीरियल पोर्ट? माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट करने 8051. हाँ, ठीक है. और VGA पोर्ट के लिए दिस इज अ VGA पोर्ट. ओके, दिस इज अ VGA पोर्ट. देन दिस इज अ गेम पोर्ट एंड these are the sound parts. एक के लिए माइक्रोफोन, एक के लिए ऑडियो, ये सब है. ओके, सो यू हैव डिफरेंट स्लॉट्स अवेलेबल. सो आई वांट यू टू नो दिस एवरी सॉकेट, एवरीथिंग. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट. यस, आप जब LAN कनेक्ट करते हो तो यू हैव दिस पर्टिकुलर LAN कार्ड. अभी ये LAN कार्ड आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर में ही देखने को मिलेगा. ये आपके ओके, यू विल बी एबल टू सी दिस इन सम ऑफ द लैपटॉप ऑल्सो जहाँ पे LAN कार्ड है. ओके, सो LAN कार्ड ऐसा होता है. LAN कार्ड ऐसा होता है. ओके, देन साउंड कार्ड. आपको आवाज जो सुनने को मिलती है वो साउंड कार्ड के कारण है. ओके, सो दिस इज, यू हैव अ साउंड कार्ड. साउंड कार्ड मोस्टली अगर हम टीवी ट्यूनर यूज कर रहे हैं तब हम साउंड कार्ड यूज करते हैं. बायोस चिप, कंट्रोल हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर वर्क टुगेदर. दिस इज इंपॉर्टेंट. बायोस, ये सबको आना ही चाहिए. दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल करता है, दैट इज बाय यूजिंग द बायोस चिप. So this is a BIOS chip. This is a BIOS chip. Okay. You have a BIOS chip as well as you have a BIOS hardware which is present in the ROM. Okay. Which is present in the ROM. So ये floppy connector है, power connector है, bus cable. Yes, ये देखो different types of cables. ये लोग आप ये केबल आप घर पे यूज नहीं करते होंगे, बट दे आर घर पे जिसके पास डेस्कटॉप है वो कैबिनेट जब ओपन करोगे तो ये सब केबल देखने को मिलेंगे.
ठीक है, ये सब केबल्स देखने को मिलेंगे। देन यू हैव हार्ड डिस्क ड्राइव। कहाँ पे सर मोबाइल के स्क्रीन डिस्प्ले में। मोबाइल, हाँ, यस यस यस, हाँ। तो ये जब किसी का अगर मोबाइल का स्क्रीन टूट गया होगा और आप गए होंगे रिपेयर करने के लिए, तो वो उसने बोला होगा कि आपकी स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपके सामने उसने रिपेयर करके किया होगा तो वो स्क्रीन निकालेगा और स्क्रीन को वो एक सॉकेट में डालेगा। ओके, so there these cables are used and they are parallel. Remember one thing, parallel cables are used where communication is very at a shorter distance, and serial ports are used where the communication is at a far distance. इसलिए जो प्रिंटर जो रहते हैं या फिर ये जो चीजें आप मुझे बता रहे हो स्क्रीन की, ये जो पास पास में जो चीजें होती है, इसके लिए हम पैरेलल केबल्स लगाते हैं। तो ये सब पैरेलल केबल्स आर नथिंग बट दे आर द बंडल्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ वायर्स। इट इज रिटन हियर आल्सो, यू कैन से बस केबल और डेटा केबल्स। अब बस आप माइक्रो कंट्रोल में पढ़े होंगे ना, यू हैव डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। वहां पे एक ही लाइन नहीं होती है। डेटा बस बोले तो 8 डेटा लाइन्स, एड्रेस बस बोले तो as far as 8051 is concerned, you have 16 lines. So they are bundles of lines, they are collection of wires. Then you have hard disk drive. ये देखो हार्ड डिस्क ड्राइव ऐसी होती है। इसके सब आपको आने चाहिए। जंपर पिंस होते हैं, पावर कनेक्टर होते हैं, आईडी कनेक्टर होता है, ये सब चीज आपको आनी चाहिए। आई एम गोइंग टू आस्क दिस नेक्स्ट टाइम। सीडी राइटर या फिर सीडी रोम, दोनों में डिफरेंस होता है। अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर जो यूज कर रहे हैं, आजकल लैपटॉप में भी सीडी रोम नहीं आ रहा है। ओके, नाउ दिस विल आल्सो ऑब्सोल्यूट नाउ। ये भी सब अभी एक्सटेंड होने वाला है। वी आर नॉट यूजिंग नाउ सीडी रोम। इवन आई वांट यू टू फाइंड आउट which are the devices which are replacing this CD writer and CD-ROM. I want which are the technology which are replacing them. Then floppy disk drive. I doubt कि किसी ने floppy disk drive यूज की होगी। कोई है जिसने floppy disk drive यूज की है? नो, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने। अच्छा, देखा है, ठीक है। ये मैंने यूज किया है, floppy disk drive I have used। उसमें भी छोटा साइज आता था, एक बड़ा साइज आता था। ओके, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एसएमपीएस जो जैसे आपने मुझे बताया, ये वाला, इसमें तो कैबिनेट भारी होता है, इसके कारण ज्यादा भारी होता है एसएमपीएस, क्योंकि इसका वेट ज्यादा होता है। ओके, सो यू शुड नो ईच एंड एवरी पार्ट नाउ। ये सब आपको आना चाहिए, एसएमपीएस। ये होने के बाद दूसरा टास्क है असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट। जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। हाँ मैम, हेलो, हाँ हाँ बोलिए मैम। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। So next 5 minutes. So assembling and disassembling the system hardware components of the personal computer. ये खुद की कंप्यूटर करना है, किसी फ्रेंड के कंप्यूटर को असेंबल डिसअसेंबल नहीं करना है। तो ये सब आप जब करोगे तो ये सब आपको चीजें देखने को मिले। ओके, सो प्लीज गो थ्रू दैट। अब ये जो चीज है यहाँ पे आपको समझेगा कि मदरबोर्ड को इंस्टॉल कैसे करना है, ABC। ओके, so now you can be a technical person. Okay, instead of asking the other to assemble for you, you can now assemble. So this is the first one, how do you assemble the motherboard. Then comes how do you install the CPU. उसमें भी different parts को कैसे assemble करना है, everything is mentioned. Okay, heat sink और फैन का installation कैसे करना है। ये देखो, ये इसके हाथ में फैन है, इसके हाथ में फैन, और हीट सिंक और फैन का इंस्टॉलेशन कैसे करना है। बाद में आपका आएगा रैम का इंस्टॉलेशन कैसे करना है। ये रैम ये सॉकेट में मुझे डालना है, ये रैम, तो आई हैव टू जस्ट पुट पुश, और पुश होने के बाद ये जो व्हाइट वाले दिख रहे हैं ना साइड वाले, वो ऑटोमेटिकली उसको पकड़ लेते हैं रैम को। ओके, सो यू विल दैट दिस व्हाइट कलर विल हैव अ होल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रैम। ओके, एसएमपीएस का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, ये एसएमपीएस है, उसको इंस्टॉल करना है। मोस्टली एसएमपीएस को कॉर्नर में जाता है, कॉर्नर में जाता है, और एसएमपीएस में फैन भी होता है ताकि जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको बाहर निकाले। ओके, तो दिस इज द इंस्टॉलेशन पार्ट। देन हार्ड डिस्क ड्राइव का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, केबल्स की यूज करना पड़ता है। सी द पावर कनेक्टर,
1 2 3 4 1 2 3 4. ओके, तो पावर कनेक्टर कहाँ पे लगाना है? So what I'm saying that you have got a good opportunity to understand this. शायद किसी ने किया होगा ऐसा. So you should know this. See the power cables. See the power cables. अगर कॉलेज चालू रहता था तो I could have shown you each and every part. Okay, but we cannot meet, so it's better that you see this. Okay. FDD ये देखो ड्राइव कैसे लगाते हैं. Then okay, this is a part. Then CD-ROM का इंस्टॉलेशन कैसे करना है? It is there. Then switches and LEDs को कैसे कनेक्ट करना है? LED connections it is here. जो हम इसकी बात कर रहे थे ना, that is one I am talking about. और ये इंस्टॉलेशन तो आपको पता है. एक बार ये समझ में आया तो आपको पता है कि क्या चीज मुझे कहाँ पे लगानी है. ओके, ये याद रखना, कीबोर्ड 6 पिन का होता है. ओके, माउस ऑल्सो 6 पिन. दोनों देखने के लिए सेम होता है. एक ग्रीन कलर, एक ये ब्लू कलर. ओके, देन हियर एक्चुअली वी आर कनेक्टिंग द मॉनिटर. ये देखो मैंने बताया था ना प्रिंटर के लिए. सो दिस इज अ प्रिंटर. ऑडियो स्पीकर के लिए दिस. इथरनेट के लिए, यूएसबी के लिए, ये यूएसबी के लिए, और ये इथरनेट के लिए. लैन कनेक्शन है, देखो सिंबल. ये सिंबल भी याद में रखना, ये उसके साइड में होता है. ये देखो यूएसबी के लिए ये सिंबल. ये लैन के लिए 3 कंप्यूटर एक लैन से कनेक्ट है. ओके, यहाँ पे भी देखो, दिस इज अ फोन, दिस इज अ स्पीकर, ऑडियो स्पीकर. कैन यू सी योर प्रिंटर? पेज निकल रहा है बाहर. ओके, एंड दिस इज फॉर मॉनिटर. So this is something like monitor. Okay. So this is all about the first study experiment. Do you have any questions to ask? So this is nothing, means you have to understand what are the different hardwares and how we can connect them and how do you assemble and disassemble them. But before assembling, you should know what are the different components available in the market. ये तो सब basic components है. और कुछ तो एब्सोल्यूट है. लेकिन आपको अभी मार्केट में क्या क्या नए बिकॉज यू नो मेमोरीज भी अभी नए आए हैं. ओके, स्टैटिक रैम. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस एंड यू हैव टू राइट डाउन. इवन दो आई विल बी शेयरिंग विद दिस विथ यू, यू कैन टेक द प्रिंट ऑफ दिस एंड यू कैन अटैच इन योर जर्नल. बट आई वांट you also to write down your handwritten notes where you will be adding all these important parts. Okay, जो ये इसमें नहीं है और आपको जो लगता है कि ये important है, that thing you should add in your own words. Okay. Yes, any questions you have? Otherwise we can stop here. Both the class CRs can take the attendance. आप लोगों ने लिया attendance? D9B? D9B. I have taken the attendance. Okay. You can share this attendance with your the lab assistant afterwards. Okay, sir. Okay. If you don't have any questions, any doubt, any queries, you can leave. Others can stay. अगर किसी को कुछ problem है, you can just stay here. Others can leave. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. हेलो सर. हाँ बोलो. सर पीडीएफ शेअर करू शकतो का? काय करायचं? पीडीएफ हो, पीडीएफ हो, चालेल ना. ठीक आहे.